Lord, there was serial 9, which was called out, Lord, and I was in another court, Lord, court number 4. He did not ask for the password. He asked for it. Lord, I will do that case today even at 3 or 3:30, of course, subject to my Lord's convenience. Lord. आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही लोग के पास टाइम नहीं है। Lord, we always feel enlightened before this honorable court. कर लीजिए सर, आज ही कर लीजिए। बॉस को बुला लीजिए और ये ऑर्डर साइन कर दीजिए। तो आज उसको 3 या 3:30 जैसा हमको कार्य हुजूर, एक वहाँ खुल रहा है, तो वहाँ पर है हम। ये आपको कहाँ टाइम मिलेगा? नहीं, टाइम है। We are always for the आप ही court. बताइए आपके लिए कौन सा टाइम सबसे शुभ टाइम है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जाए। We have our entire clock is around the majesty of the court. मिस्टर अरविंद कुमार को हम टाइम देते हैं, क्योंकि हम बोले एक केस में कॉस्ट किए हैं, तो आपको हम टाइम नहीं देंगे बिना कॉस्ट के। Not about आइए सर 3 बजे आप क्या बोलेंगे? 3:30 आज है ना सर, 3-4 केस ऑलरेडी रजिस्टर नहीं कर सकते। तो कल पर माय लॉर्ड हम तो एडजर्नमेंट कर ही दिए हैं। नहीं, एडजॉर्नमेंट विद 10,000 ₹10,000 कोई कोर्ट के पॉकेट में नहीं जाता। नहीं, वो ठीक, आपके एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाता है। एडवोकेट क्लर्क्स एसोसिएशन को जाती है, उसमें भी आपको परेशानी नहीं, वो बहुत अच्छा करती है। वी ऑलवेज बाउ टू माय लॉर्ड। दे डिजर्व मोस्ट। कम मेहनत नहीं करते हमारे एडवोकेट। नहीं, बहुत सही। हम लोग का स्टेज समूचा बनता है तो उन्हीं लोगों के कारण बनता है। अदरवाइज तो इसको 3:30 बजे नहीं होता। उनके हाथ में है, हाई कोर्ट की काफी प्रेस्टीज उनके हाथ में है। बहुत सही बात, फाउंडेशन हम लोग के लिए तो सारा कॉस्ट उन्हीं के पास जाता है। हाँ, ठीक बात। तो ठीक है, आप कॉस्ट दीजिए, अगला दिन में करिएगा। तो कॉस्ट हुजूर ये जो सब मेरे पॉकेट से लगने जा रहा है, तो इससे वही तो बोल रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है आपको? एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन को हुजूर का जो ऑर्डर होगा वी विल बाउ टू। अगर वैसा ही होगा तो हम लोग भी पेमेंट कर देंगे, कर दीजिए। लेकिन 3:30 बजे का रख दिया जाए। नहीं हो पाएगा सर, हम ऑलरेडी केस नहीं हो पाता है। 2:15 बजे 2-3 केस भी होना इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश एडजर्न हो जाए, 2-3 केस में आया हुआ है, देन यू कैन टेक योर चॉइस। लेकिन आज नहीं होगा तो वो कॉस्ट हम बिलीव नहीं करेंगे। उसको 2,000 कर दिया जाए। 2,000 वी ऑलवेज। ठीक है सर, आप सीनियर हैं, इसलिए आपकी बात ठीक है। मिलॉर्ड, Continue case item 10 from day is second appeal 11 of 2023. क्या हुआ? मिला इसमें कि ट्रायल कोर्ट जो है मेरा सूट को डिसमिस कर दिया कंप्लीटली। अपीलेट कोर्ट क्या किया है कि शेड्यूल 1 में हमको शेयर दे दिया, शेड्यूल 2 और 3 में हमको कहा कि नॉट एंटाइटल्ड, और शेड्यूल 4 में कहा कि अभी इसमें डिसाइड नहीं हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, और डिक्री जो ड्रॉ किया, डिक्री में एंटायर अपील को ही डिसमिस कर दिया है। और यस दैट मतलब इसलिए हम भी नहीं, हम बाहर से आए थे, आई वाज वेरी कर रहे थे कि जो It is made clear that the plaintiff and defendant, first party, second party, third party, are not entitled to get share in the suit and described in schedule 2 and 3. सही Schedule 1 में आपको दे दिया, हाँ। 1A, 2 and 3 में आपको डिनाई कर दिया, और 4 में की कोई फाइंडिंग नहीं दिया कि जो कि इसमें नहीं अभी डिसाइड हो सकता है, ये है, इसमें डिटेल नहीं है ये। और डिक्री में अपील डिसमिस कर दिया है, कुछ नहीं, और अल्टीमेटली मिलॉर्ड पेज 121 और तीनों अपील में कोई मेरिट नहीं, डिसमिस। ये कोई करेक्शन नहीं है कि ये विद मॉडिफिकेशन या ये नहीं। तो ये अगर मान लीजिए कोई एरर हो जाता है तो उसका रेमेडी आपके पास है ना? नहीं, डिक्री मिलॉर्ड अपार्ट फ्रॉम सेकंड अपील में नहीं, सेकंड अपील में अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल 1 में शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 का प्रॉपर्टी जो है उसमें भी रिलेटेड है। थोड़ा सा हमको अगर 2,000 रुपया हमको भी फाइन लगा दिया जाए, मगर एक टाइम दे दिया जाए, हम नहीं पूरा एडमिटेडली हम कह रहे हैं कि हम नहीं पूरा ये किए तैयार हैं, इसी के लिए। तब
को रखें, 8 को 2000 रुपये हम जमा करेंगे, हम अपने पॉकेट से जमा करेंगे, हम पढ़े नहीं है इसलिए हम नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टेक्स रहता है, पार्टीशन सूट पे काफी स्टेक्स रह जाता है। सेकेंड अपील नंबर 11 of 20. Learned counsel for the appellant seeks adjournment. He has submitted that he is not ready with the plea today. On his request, the matter is adjourned and is ready to proceed. 8 अप्रैल अपने से जमा कर अपने दीजिए, ऑर्डर नहीं किए हैं। अपने से जमा कर देंगे, Order एकदम नहीं फेयरली आई एम सेइंग ऑर्डर नहीं किए हैं कॉस्ट, हम जमा कर देंगे, आप अपनी तरफ से। यस तो ऑर्डर नहीं किए हैं। I'm telling you. यस, बट आई विल डिपॉजिट। एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन यस के लिए आप लोग को बहुत बढ़िया कुछ करना चाहिए। आज ही करा Their entire family का लाइफ आज नया हाईकोर्ट में आ गए हैं, आप अपना फीस बढ़ा नहीं है, उनका फीस नहीं बढ़ी। करेक्ट? सही बोल रहे हैं ना? नहीं, उन लोगों का फीस बढ़ा बढ़ गया। Passover case, item 7, first appeal 136 of 2024. तो थोड़ा ना वो टाइमलाइन Lordship. किसका है सब्स्टिट्यूशन? Original Lordship, the plaintiff number आइए 4. ना। IA number 3030 Lordship. Two IAs are there, Lordship. First Lordship, main IA is 236 of 2025. This is for substitution. And IA number 30, substitution of the original appellant, plaintiff number 4. Who died on 23/5/23 of the suit, Lordship. Original suit number 171 2014. He could not be substituted. He could not be substituted. Judgment dated, Lordship, is 29th February 24. 24. Lordship. कौन सा पोजीशन में आपने ये सब Lordship. It has been filed under Order 1, Rule 10, read with Order 22, Rule 3 and 9, read with Section 151 of the CPC, Section 151. invoking inherent power of this court. These are the admitted facts, Lordship. आप कौन सा judgment दे रहे हैं? हाँ, Lordship. We have already supplied all the हाँ, judgments. ये कल ही रहते हैं। One by one, Lordship. इसमें कोई डिले भी हाँ, delay, Lordship. Another substitution application we have filed, IA number 3030. Delay तो naturally है, और 25 Lordship. डिले कितना है? Delay, Lordship, exact I have stated 497 days. 497 days. Since, Lordship, the substitution application was filed in 2025, after the stamp reporter made a report, only thereafter, Lordship, this application under Order 1, Rule 10 was filed. And You are therefore, the I plaintiff? am the plaintiff. Appellant is the plaintiff? Appellant is the plaintiff, तो appellant ने अपने मेमो ऑफ अपील में Lordship. डेड पर्सन को पार्टी नहीं, the party was party नहीं बनाए थे, knowingly, because when the person came to us, we inquired about each and every person. We came to know that the plaintiff number 4, Shankar Mahto, has died during the pendency of the suit. तो लेकिन Therefore, आपने उनके लीगल ईयर्स को भी अपील में पार्टी नहीं बनाया, तो इसलिए हुजूर ये आईए फाइल वो किए. ऑब्जेक्शन था तो आपने ये एडिशन ऑफ पार्टी हाँ, addition of parties, yes, and therefore the delay is 497 days. ये इट इज अराइजिंग आउट ऑफ पार्टीशन No, Lordship, it is the original title suit. Lordship. तो ये जो जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट का तो 2016 वाले दे रहे हैं
हाँ 2016 पहले 2005 से देखा जाए वॉल्यूम 6 पेज पैरा 6 and 9 2005 volume 6 SCC 300 SCC 300 पैरा 6 and 9 Para 6 and 9. 6 talks about the nullity and 9 the remedy thereafter. Para 6 तेरा पढ़ी. Not sure. As rightly pointed out by the counsel of the appellants and fairly agreed to by the learned senior counsel for the respondent, the decree passed by the High Court in favor of the party who was dead and against a party who was dead is obviously annulling. It is conceded that the legal representatives of neither of the parties were brought up. In this case, Lordship, both the parties from this side and that side were not brought in record. In the second appeal, and the second appeal stood awaited. On this short ground, the appeal is liable to be allowed and the decision of the High Court set aside. Now, Lordship, paragraph 9 is the remedy. In this situation, we think the interest of justice would be subserved if the orders and the decrees passed in the suit, in the appeals in the second appeal are set aside and the suit remanded to the trial court for making proper inquiry into the question whether, because since it was a compromise degree was challenged, therefore, Lordship, these are observations are there. Now the legal representatives from their Lordship are reading. Now the legal representatives are before us. The trial court will direct the formal correction of the cause title in the plaint, giving an opportunity to the supplemental plaintiff to bring on record other legal representatives of the parties to the suit, if any. The trial court will thereafter proceed to decide the question of the existence or otherwise on a compromise dispensation. Now, here, Lordship, the remedy has been given. It is a full bench, Lordship, that the trial, it will be remanded to the trial court. The memo of appeal will be corrected by the order of The plaint. plaint will be corrected by the order of the Honorable Court, and thereafter the suit will proceed. If any of the parties want to give some additional evidence, these things are there. If they want to amend the plaint, everything If there is are any other legal any evidence, yes, you Lordship. report it. Now So there are ultimately the final outcome of this appeal would be a remand. yes, Lordship. पहले तो substitution. Not remand on the merit, Lordship. Not on the merit. Yes, only on the point of substitution. But the award, but the impugned judgment has to be set aside. Set aside. Otherwise, the Yes, contract yes, will yes. be clear. It will be set aside. Now, Lordship, thereafter, the 2016 volume 1. एक judgment काफी नहीं. काफी है इसका उधर ये रिलाई भी हुआ है ये अपने हाई कोर्ट दैट आई आल्सो आपने दिया, CMP. CMP 928 इसमें क्या हुआ? same thing Lordship, it has been remanded to the trial court. Paragraph 14 and 15 Lordship. ये तो CMP है. हाँ CMP इधर इसलिए हुआ था हम बता दे रहे हैं 928 to 52. This was also against the final order. Since an order was passed, Lordship, in a miscellaneous. It was withdrawal of the suit. हाँ for the withdraw. हाँ suit withdraw हुआ था इसीलिए CMP फाइल किया. इसीलिए 27 CMP में. हाँ yes Lordship. And therefore this order there also Lordship the original person who was filed an application. खाली यही वाला. हाँ इसी को खाली फॉलो करना हाँ. है. आप बताइए क्या बोलना है आपको? As per the Jharkhand, सारे रेस्पोंडेंट्स अपील करते हैं. जी, जी, जी। हाँ. इसमें जो रूल 96 में Rule 96 में है Of Jharkhand after passing of after deserving judgment या नहीं, after after- passing of decree. Those things are there Lordship but this, दोनों these हैं, are the दोनों, rules. दोनों है। What we are submitting After here. है हाँ, and before भी। before दोनों का है दोनों, provision हम उसमें. मुझे पढ़ देते हैं। हाँ तो नहीं तो इससे क्या बोलना चाहते हैं? इससे हम ये बोलना चाह रहे हैं जो ना कि जब ये the respondent number 4 plaintiff number 4 was died on 23rd of May 2023 and judgment was passed on 29th of February 2024. When prior to the pronouncements of judgment and decree, the plaintiff number 4 has died. Therefore, remedy her legal the legal heirs, one of the two sisters are brought on record, and the sister has not impleaded as a party legal petitioner number 4 there. In spite of knowing fully that my brother has died, the same has not been made a party. Therefore, party may be impleaded and notice be issued to them.
Lord, and also my landed defendant file a limitation application To whom? to the Everybody is appealing. to the substituted heirs, my lord, to the substituted heirs, and also, my lord, with regards to the limitation application 3030, my lord, properly not been explained. Limitation बाद में पहले ये आईए नंबर 236 of 2025 हाँ, इसमें मुझे जो भाई plaintiff is the appellant before us. Plaintiff Yes. number 4 has not joined as an appellant. तो इनके legal heirs तो pro forma defendant ही बनेंगे ना, Performer respondent. respondent ही बनेंगे ना, pro forma respondent. यदि उनको नोटिस जाएगा नोटिस तो जाएगा ही, of course जी जाएगा. जी बिना हम notice के वही कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करके नोटिस उनको कर दिया जाए, substitute करके कि substitute करने के लिए. सब्स्टिट्यूट करने के पहले लिमिटेशन But और the process नहीं हुआ. नहीं, with first time. नहीं फर्स्ट टाइम Take up पूरा. First appeal number 136 of 2024 with IA number 236 of 2025. The learned counsel for the appellant has दोनों IA number 236 of 2025 and IA number 3030. The learned counsel for the appellant has submitted that original plaintiff number 4 expired on 23/5/2023 during the pendency of the suit. The impugned judgment in the suit is dated 29/2/2024. However, he was not substituted in the suit and it was not brought to the notice of the court that the original plaintiff number 4 has expired. He has submitted that accordingly, by filing the first appeal, though filed on behalf of other plaintiffs, the original plaintiff number 4 did not join, and office objection has been raised with regard to party position with respect to original plaintiff number 4. Consequently, IA number 236 of 2025 has been filed under Order 1 Rule 10, read with Order 22 Rule 3 and 9, read with Section 151 of CPC, seeking addition of party / substitution of original plaintiff number 4. The learned counsel has further submitted that IA number 3030 of 2025 has been filed seeking combination of delay of 497 days in taking steps in connection with original plaintiff number 4. He has referred to the judgment passed by the Honorable Supreme Court relating to bracket 2005 bracket 6 SSC 300 para 6 and 9 to submit that the Honorable Supreme Court has held that in case one or the other party has already expired and continues to be in the record, such a judgment is a nullity in the eyes of law. However, the remedy to such a situation has been provided in paragraph 9 of the aforesaid judgment, wherein the Honorable Supreme Court has made observation that the trial court would make formal correction in the cause title and opportunity was also to be given to the supplemental plaintiff to bring on record the other legal representative and the suit was to be decided afresh. He submits that in the same case the matter was regarding compromise in the suit. The learned counsel submits that the details of legal heirs and successors of original plaintiff number 4 have been given in para number Para number 5. No, para number 5. para 5 of the introductory application. Counsel appearing on behalf of the respondents has submitted that notice be issued to the proposed legal heirs and successors of original plaintiff number 4 both in both the introductory applications and thereafter appropriate order. Considering the submission, let notice be issued to the legal heirs, proposed legal heirs and successors of plaintiff number 4, whose details have been mentioned in paragraph 5 of IA number 236 of 2025
2025 and also in the petition seeking confirmation of delay through IE number 3030/2025. दोनों IE में notes हाँ under ordinary process for which requisites be filed within a period of 15 days. Close this case on 30th April of 1872. सूट सर इतने पुराने हो जाते हैं ना, इसलिए क्या हो रहा है कि people use track, advocates also use track. Yes. One of the judgment notes which I have provided, the Honorable Supreme Court has observed that also. That was a suit of 1972. Supreme Court decided in 2023. Observation was given that it may be decided within 6 months after the remand. और आजकल जिस तरह से सोसाइटी ब्रेकअप हो रहा है, सबका लीगल सक्सेसर्स का भी पता नहीं, नहीं, नहीं। अचानक कोई आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हमको उनके बच्चे अपने भी फैमिली का पता नहीं, अपने फैमिली का भी पता नहीं। नहीं पता। नहीं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो होता है तो लोग जान के भी नहीं बताते हैं कि डेथ हो गई है। हाँ, ये सब भी बहुत तरह का प्रॉब्लम है, सोसाइटी का अपना प्रॉब्लम। जबकि इनके फादर सूट कंटेस्ट किए हुए हैं, खैर वो बात की बात है। Fifth is Item 5, First Appeal 175 of 2024. Madam, in this case, one advance adjournment notice was circulated yesterday, madam. We have received the fresh wakalatnama yesterday, madam. And with consent, we have taken इसका कंसर्न the respondent. कल ही डाले हो फाइल है ना बस। इंटायर ब्रीफ तो नहीं है तो वकालतनामा भी ना भी नहीं मेमो ऑफ अपील बढ़िया है, इंप्यून ऑर्डर है ना। इंप्यून ऑर्डर है, सीनियर भी इंगेज किए हैं, सम टाइम में बी ग्रांटेड मैडम। देखिए इस तरह के प्रैक्टिस को बिल्कुल पसंद नहीं है। Actually- 10,000 रुपए कॉस्ट करके पहले एडजर्नमेंट हुआ है, अभी वो जो लिटिगेंट है वो एक दूसरा काउंसिल एंगेज किए हैं। नहीं, वो रिफ्यूज कर दिए कि हम आपका केस नहीं करेंगे, इसलिए वो ब्रीफ उनको हैंड ओवर किए। He has refused that he will not argue this case. नो ऑब्जेक्शन Madam, नो ऑब्जेक्शन additional वकालतनामा. एडिशनल वकालतनामा कॉन्सेप्ट नहीं है। But he was not advocate on record, madam. The counsel who was arguing the case was not the advocate on record. Mr. P.K. Lala, Pritam Kumar Lala was the advocate on record, and Mr. Pradeep Must have Modi. given you no objection. You must have taken no objection from me. Additional वकालतनामा, in additional वकालतनामा, no objection is not required. आप लोगों का वकीलों का बात है, वो भी साइन, हाँ वो भी साइन, वो भी साइन वो भी साइन. आप Not some respondent. you are giving consent for the Yesterday on, rang me up. Yes, on phone I had taken. On phone he has taken consent. Yes. Let me. number 175 of 24. Mr. Yes, Jharkhand, Madam. when it comes to finance,
adjournment and submits that advance notice seeking adjournment has been certificated. He has submitted that he has filed fresh wakalatnama and but has not yet received the entire records to argue the case. He has also submitted that a senior counsel has also been engaged for the purpose of argument. The learned counsel for the respondents, Yes. all the respondents, Yes, sir. has no objection to the prayer for the judgment. On the last occasion, the case was adjourned upon payment of cost of rupees 10,000, which has been deposited by the applicants. Pose this case on 14th of August. 14 आराम से फाइल करिए. Appearance. For final to item 2, second appeal 118 of 2019. Please applicant. Second appeal against the judgment of reversal, the partition suit under the Mohammedan law. Brief list of dates and synopsis. Under the Mohammedan law. What is the point of Yes. what are the substantial questions of Substantial question of law and the first substantial question of law. Whether the first appellate court committed the perversity by ignoring the fact that even though undisputedly the plaintiffs are the heirs of the Ghulam Rasul, they having not consented to the bequest after the death of Ghulam Rasul, the will executed by Ghulam Rasul in favor of defendant number 3, Muhammad Aslam, was not valid in view of Article 117 of Principle of Mohammedan law. Second, whether both the courts below they have committed perversity by admitting the Ivanama they allegedly executed by Ghulam Rasul in favor of Ghazala Parveen in absence of any pleading by any of the parties to the suit in respect of the same. Whether the first appellate court they committed the illegality by observing that the 13 decimal of suit land have been mutated in the name of Ghazala Parveen. Hence, the Ghazala Parveen is a necessary party to this suit, and thus the suit is the bad for non-joinder of necessary parties. This case, my lord, was the Ghulam Rasul, one of the father of the plaintiffs as well the defendants. They purchased the land area 16 decimals, and his lifetime, my lord, the 23 decimals land was sold to the different persons by way of the registered sale deed, and remaining the 37 decimals lands was the remains, and for that this plaintiff they filed a suit for partition, and the defendants they filed the WS Malot says ki no, was the father of these defendants, recorded tenant Ghulam Rasul. They executed the will, the registered will in favor of defendant number 3, Muhammad Aslam, the younger son, by way of the two registered deed of will, one 1989 and second 2004. why two? This is the suspicious circumstance, my lord, with the by way of registered deed, my lord. The two first, my lord, the 30 decimals land was the transferred, and in the second deed, my lord, the 13% was the will in favor of defendant number 3. Total 43. The property was recorded in the name of Ghulam Rasul. It was not his ancestral property. No, not ancestral property, my lord.
But section Why was But consent article- required from legal, legal years of Ghulam Rasul? If it was his own property, yes, Madam. why Required. was Section 51 or Article 51 of the Mohammedan law says that there is no difference between the self-acquired property and the in ancestral property. Therefore, in both the cases, Madam, no. yes, not the Section 51 में मैं बात करती हूँ. आपको उल्टा पड़ Section 51 वही कहता है. मेरे बात पढ़ी. You see, even in case of ancestral property, Yes, ma'am. it is like, like Daya Bhaga law. Right? Yes, but under the Mohammedan law, my lord. But For under the self-acquired property also, you have to take consent from your legal years, yes, legal ma'am. years. Yes, ma'am. Yes. As because ma'am, there is no difference between the self-acquired property So therefore, and the ancestral property. even the Ancestral property already partitioned among the co-sharers prior to the suit, my lord, and thereafter the suit was filed. आपको digest हो रहा है कि जो आदमी खुद self-acquired property होगा उसको गिफ्ट करने के लिए भी आपको consent लेना पड़ेगा. विल के लिए है हुजूर, विल के लिए विल भी अच्छा विल आफ्टर डेथ कॉन्सेंट का जरूरत है. आफ्टर डेथ चूंकि इसमें ओरल विल भी इज द आल्सो द परमिशिबल. हिबा है ना, हिबा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ गुलाम रसूल. During his lifetime, it must have been done, coupled with possession. Already in possession, and the plaintiff are also in possession. दोनों possession. हाँ, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. हम लोग यहाँ पोजीशन में नहीं है कि हम लोग सिर्फ पोजीशन में, पोजीशन में नहीं है. और इसमें 23 डेसिमल्स द लैंड तो ऑलरेडी द सोल्ड टू द अदर पर्सन. जरा इसका ट्रायल को कर देना. हाँ, और इसमें ये ऐसे भी हो सकती है अगर जब 23 डिसमिल जमीन जब बेच दिए तो फिर 43 डिसमिल जमीन कहाँ से बचा जो इनके नाम में विल हो गया. पढ़िए जरा. हाँ, ये ट्रायल को कर जजमेंट हिंदी में है. दोनों कॉन्फिडेंट फाइंडिंग है. नहीं रिवर्सल है. रिवर्सल है तो पहले ट्रायल को. हाँ, ट्रायल कोर्ट में What was the suit for? suit for partition. Suit for partition, and the defendant they denied the partition on the ground that the land has already been willed in favor of the defendant number 3. तो प्रारंभिक डिक्री 2/5 दिया है. हाँ, वो तो मेरे फेवर में है. Suit was the decreed in favor of plaintiff. Defendant आपने कोर्ट दे रिवर्स दी डिक्री में. पढ़िए जरा प्लेन रिटन स्टेटमेंट जो इसमें रिकॉर्डेड है. पढ़िए दो पन्ना है. पढ़िए. प्लेट इसका ओरिजिनल प्लेट और डब्ल्यूएस पढ़े हुए जो हाँ नहीं इसी में से पढ़िए. इसी में से पढ़. वादीगण या बंटवारा वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध सर्वे जानकार के विरुद्ध आयुक्त की नियुक्ति करके एवं अलग से तख्ताबंदी तैयार करके वादीगण के पक्ष में 2/5 हिस्सा को दिलाने और न्याय की प्रक्रिया के माध्यम से वादीगण को 2/5 हिस्से पर दखल कब्जा दिलाने के बाद व्यय के साथ साथ अन्य अनुतोष अथवा अनुतोषों को जो न्यायालय उचित समझे वादीगण के पक्ष में प्रदत्त करने के लिए लाया है. वादीगण ने बाग भूमि को बाग पत्र के अंत में वर्णित अनुसूची में खाता नंबर 62 प्लॉट नंबर 647 रकबा 0.60 एकड़ के मध्य 37 एकड़ बताया है. वाद पत्र के अनुसार वादीगण के संक्षिप्त में अभिवचन है कि उभय पक्ष मुस्लिम जाति के हैं और वे विरासत एवं उत्तराधिकार के मामले में मुस्लिम विधि से शासित होते हुए वादीगण के आगे अभिवचन है कि शेख मोहम्मद गुलाम रसूल ने मौजा चेटर थाना व जिला गुमला के अवस्थित थाना नंबर 62 प्लॉट नंबर 647 रकबा 0.60 एकड़ जमीन को जोहरा खातून से निबंधित केवाला संख्या
2172 दिनांक 6/12/1966 के द्वारा क्रय किया है। खरीदने के बाद तो उपरोक्त जमीन पर शेख मोहम्मद गुलाम रसूल दखलकार हुए और अपने नाम दाखिल खारिज करा करके बिना किसी हस्तक्षेप के उपरोक्त जमीन पर शांतिपूर्वक खेती बाड़ी करता चला आ रहा है। वादीगण का आगे अभिवचन है कि शेख मोहम्मद गुलाम रसूल अपने पीछे 3 पत्नियां जागो बीबी, बीबी बतुलन एवं कमली बीबी को छोड़कर स्वर्गवासी हुआ। जागो बीबी अपने पीछे मात्र एक पुत्र मोहम्मद अख्तर, वादी संख्या 1 को बीबी बतुलन के पीछे एक पुत्र मोहम्मद मकबूल आलम और कमली बीबी अपने पीछे 3 पुत्र मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद इकरामुल और मोहम्मद असलम को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। वादीगण के अपने वंशावली को निम्न प्रकार से दर्शाया है। वादीगण का आगे अभिवचन है कि मोहम्मद गुलाम रसूल ने अपने खरीदी जमीन को कुछ भाग 23 एकड़ जमीन विभिन्न लोगों के पक्ष में विक्रय किया है। शेष 0.37 एकड़ जमीन अभी बची हुई है। उपरोक्त 0.37 एकड़ जमीन भूमि दोनों पक्षों में शामिलात जमीन है और शेख गुलाम रसूल के उत्तराधिकारियों के बीच कभी बंटवारा नहीं हुआ है। क्योंकि गुमला में विकास हो रहा है, इसलिए उक्त जमीन में अब खेती बाड़ी नहीं हो रही है। इस प्रकार मोहम्मद गुलाम रसूल के प्रत्येक पुत्र 1/5 हिस्से के अधिकारी हैं। उपरोक्त बाद भूमि पर वादीगण 2.5 हिस्से तथा प्रतिवादीगण के 3/5 हिस्से के अधिकारी हैं। कमली बीबी को सिसई रोड गुमला स्थित अन्य प्लॉट को सोहराई राइट द मेहर के रूप में दिया गया है। इसलिए उपरोक्त बाद भूमि पर कमली बीबी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पक्षकारों एवं बहनों का उपरोक्त प्लॉट में कुछ जमीन बेचने के पश्चात उनके दफ्तरी राइट भरण पोषण हेतु कुछ रुपया दिया गया है। इसलिए उपरोक्त बाद भूमि पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी ने बहनों के इस बाद में पक्षकार नहीं बनाया है। शेख मोहम्मद गुलाम रसूल के कुछ पैतृक जमीन जो सिसई रोड गुमला में अवस्थित है वो बंटवारा प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कई बार बाद भूमि का बंटवारा करने हेतु अनुरोध किया, किंतु इस मामले में कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। अंत में वादीगण ने माह जनवरी 2022 में बंटवारा करने के लिए अनुरोध किया, किंतु प्रतिवादीगण बंटवारा करने से इनकार कर दिया। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ी। वादीगण ने बाद का कारण तब उत्पन्न होना बताया जब वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से बंटवारा करने का अनुरोध किया। अंततः माह जनवरी 2012 में बाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण उपरोक्त बाद भूमि का बंटवारा करने से इनकार कर दिया। वादीगण ने बाद संपत्ति के मूल्य 1,50,000 रुपये बताते हुए 250 रुपये की निश्चित न्याय शुल्क की अदायगी का किया जाना बताया है तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बताया है। इस प्रकार वादीगण के बाद पत्र के अंत में वर्णित अनुसूची भूमि पर 2/5 के हिस्से का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत किया गया। सम्मन प्राप्ति के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 11/9/2012 को संयुक्त रूप से एक लिखित कथन दाखिल किया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद वर्तमान स्वरूप पोषणीय न होना, वादीगण के वाद के कारण प्राप्त न होना बताया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद पत्र की कंडिका 1 से 5 की विषय वस्तु को स्वीकार किया है तथा वाद पत्र के कंडिका 6 से 9 के विषय वस्तु को अस्वीकार किया तथा अभिवचन किया है कि विषय वस्तु के वादीगण को मानित करने की आवश्यकता है। प्रतिवादीगण के आगे अभिवचन में इस तथ्य सही है कि खाता संख्या 62 प्लॉट नंबर रकबा 0.60 एकड़ शेख मोहम्मद गुलाम रसूल के निबंधन केवाला संख्या इतना के द्वारा जोहरा खातून से क्रय किया है और उस पर दखलकार है तथा शेख मोहम्मद गुलाम रसूल के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ है। यह भी प्रतिवादीगण के स्वीकार किया है कि शेख मोहम्मद गुलाम रसूल के 5 पुत्र हैं, किंतु सभी पैतृक जमीन का बंटवारा वादीगण के एवं प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है और सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से पर दखलकार हैं। प्रतिवादीगण के आगे अभिवचन है कि वादी संख्या 2 मकबूल आलम आज से 40 वर्ष पहले 20,000 रुपया प्राप्त कर लिया
और उसकी मां बसिया जाकर दूसरी शादी कर लिया तथा उसके दूसरे पति तथा उसको एक बेटा आलम पैदा हुआ। प्रतिवादीगण के आगे अभिवचन है कि उपरोक्त वाद भूमि शेख मोहम्मद गुलाम रसूल में स्व अर्जित संपत्ति है जिस पर उसका पूर्ण रूप से दखल कब्जा है। शेख मोहम्मद गुलाम रसूल एक बूढ़े व्यक्ति थे, इसलिए अपने छोटे पुत्र मोहम्मद असलम के देखभाल में रह रहे थे। इसलिए मोहम्मद असलम की सेवा से खुश होकर शेख मोहम्मद गुलाम रसूल ने अपने छोटे पुत्र मोहम्मद असलम के पक्ष में 2 निबंधन वसीयतनामा, जिसमें एक वसीयतनामा खाता नंबर 62 प्लॉट नंबर 647 रकबा 30 एकड़ 0.30 एकड़ जिसका बुक नंबर 3 19 दिनांक 6/26/7/99 है, और दूसरा निबंधित वसीयतनामा उपरोक्त खाता प्लॉट नंबर 0.13 एकड़ जमीन जिसका बुक नंबर 3 31 दिनांक 9/11/4 है निष्पादित किया है, जिसका जानकारी वादीगण को थी। शेख मोहम्मद गुलाम रसूल की मृत्यु दिनांक 8/8/2006 को हो गई एवं बाद भूमि पर मोहम्मद असलम को पूर्ण रूप से दखल कब्जा हुआ और मोहम्मद असलम का नाम म्यूटेशन केस नंबर सेक्शन सच के द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ। इस संबंध में किसी भी कोने से किसी द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। इस प्रकार वादीगण के उपरोक्त वाद भूमि के किसी भी प्रकार का हिस्सा पाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के बाद पत्र के कंडिका 10 के विषय वस्तु को स्वीकार करते हुए अभिवचन किया है कि सिसई रोड स्थित भूमि जो पैतृक जमीन थी उसमें बंटवारा हो चुका है और वादीगण में उसमें हिस्सा मिल चुका है। वादीगण कभी भी प्रतिवादीगण से बंटवारा करने की मांग अथवा अनुरोध नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा का जो अनुतोष चाहा है उसके अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को न्यायहित में खारिज किया जाए। इसलिए thereafter मानवती issues were felt. मानवती issue number 5 and 6. 5 and 6 मानवती क्या बीवी बदलन बसिया चली गई और दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया तथा उससे एवं दूसरे पति से मकबूल का जन्म हुआ था। क्या शेख मोहम्मद गुलाम रसूल के पुत्रों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका था और मकबूल को 20,000 रुपया लेकर अपने हिस्से को छोड़ दिया था। ये दोनों बिंदु लगभग एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से इन दोनों बात बिंदुओं को एक साथ किया जाता है। यह बात बिंदु निर्णय के लिए महत्वपूर्ण बात बिंदु है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण अपने अभिवचन में अभिकथित किया है कि शेख मोहम्मद गुलाम रसूल के 5 पुत्र हैं। उसके सभी पैतृक जमीन का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है एवं सभी हिस्सेदार अपने हिस्से पर दखलकार हैं। इस तथ्य में वादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि वादीगण अपने विवचन में मौखिक साक्ष्य बताया कि कमली बीवी जो प्रतिवादी संख्या 4 है को सिसई रोड स्थित जमीन में हिस्से में दे दिया गया है, इसलिए वाद भूमि इसका अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपने विवचन में यह भी अभिवचन किया है कि मोहम्मद मकबूल आलम जो इस वाद का वादी संख्या 2 है, आज से 40 साल पहले 20,000 रुपये प्राप्त कर लिया था और उसकी मां बदलन बीवी बसिया में जाकर दूसरी शादी कर ली थी। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से परीक्षित कराए गए प्रतिवादी साक्षी संख्या 2 एवं स्वयं इस बात के प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में बताया है कि मोहम्मद मकबूल की मां बदलन बीवी अपने पहले पति शेख मोहम्मद गुलाम को छोड़कर अपना तथा अपने पुत्र मोहम्मद मकबूल के हक लेकर बसिया जिला गुमला चली गई। वहां पर बदलन बीवी दूसरा विवाह रचाया। वसीयत है कि गिफ्ट? वसीयत है। विल है कि गिफ्ट? विल है। प्रोबेटेबल? नहीं, क्योंकि मोहम्मदन लॉ में कि वही पिछले बार भी हम लोग आर्गुमेंट किए थे कि इसमें इवन ओरल will is also permissible not therefore the probate is not required. It's a bill. It's a bill, Not a gift. not gift. But my lord, only condition. Hiba is not bill. No, hiba is not. Hiba is the gift, my lord, which was Hiba is gift. hiba is gift. Another, therefore, my lord, the second substantial question of law, my lord, this the beyond the pleadings, the in course of the trial, the defendant says no,
some of the land, 13 dismissed land by way of the 3 Hibanama, the land was transferred to the Ghazla Khatun. Therefore, the Ghazla Khatun was the necessary party in this suit. Therefore, my lord, that plea was the beyond the pleading. So ये क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ गलत हुआ? हिबानामा इज व्हाट? हिबानामा इज गिफ्ट. Gift. You are saying that it's a case of will. हाँ, yes, my lord. Yes मतलब क्या? नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं हुजूर कि विल जो है हम लोग का तो डिफेंडेंट का ये कहना है कि दो विल से प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर दिया गया 43 विल से डिफेंडेंट नंबर 3 के नाम में। इनका आगे फिर अपना एविडेंस में अपना लाए हैं कि उसी जमीन से 3 हिबानामा से जमीन एक गजला खातून को भी ट्रांसफर किए हैं बाय गुलाम रसूल। Therefore, at present there is no land remains in name of the गुलाम रसूल। Therefore, no question of partition। तो इसीलिए ये बाद में आया कि जब गुलाम रसूल का जमीन जब ये बोल रहे हैं कि गजला खातून को भी गिफ्ट कर दिए, इसमें है एग्जिबिट B678। ये डेवलपमेंट आया ड्यूरिंग ट्रायल, ये डेवलपमेंट आया कि गजला खातून को भी जमीन ले लिया और देयरफॉर गजला खातून की बात करी है ना बिल की बात। हाँ, प्लेंटिफ कुछ नहीं हम लोग कुछ नहीं बोला। डिफेंडेंट किसकी बात किया है? गिफ्ट की बात किया है कि अपना WS में विल का बात किया और बिल का बात, हाँ गिफ्ट का बात नहीं किया। और एविडेंस में गिफ्ट और विल दोनों का बात किया। गिफ्ट एंड विल दोनों का। तो आपका कहना है ये गिफ्ट का तो कहानी गलत है। हाँ। कि ऐसा कोई डिटेल स्टेटमेंट में नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है। हाँ, ये जो बिल जिस प्रॉपर्टी का किया है उसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट भी है कि अलग प्रॉपर्टी? उसी प्रॉपर्टी का है। सेम प्रॉपर्टी का एक गिफ्ट भी है 13 डिसमिल का गिफ्ट। बिल और गिफ्ट दोनों अलग-अलग आदमी के नाम पर है किसी? हाँ, अलग-अलग। बिल किसके नाम पर? विल है मोहम्मद असलम के नाम में, डिफेंडेंट नंबर 3 मोहम्मद असलम। हाँ। फ्रॉम सेकंड हस्बैंड, थर्ड वाइफ। she because this son is from second husband. इनके सेकंड हस्बैंड से है ये बेटा? नहीं, थर्ड वाइफ से ये 3 बच्चे हैं। थर्ड वाइफ से इनका बेटा नहीं है। थर्ड वाइफ गॉट मैरिड एंड देन मोहम्मद असलम वाज बोर्न। नहीं, वो तो सेकंड वाइफ है। वो गॉट सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज एट बसिया, और वो है तो उसका तो डिफेंडेंट नंबर 3 मकबूल है। वो तो इन्हीं का गुलाम रसूल का ही बेटा है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। वो तो और जो जिसके नाम से गजला खातून, गजला परवीन जो है, जिनके नाम से गिफ्ट करने का बात है, वो डिवोर्सी वाइफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2 है। वो बोले कि मेरा बहुत सेवा करती थी और चूंकि डिवोर्स दे दिया, हम बहुत दुखी हैं, इसीलिए इसके नाम से हम गिफ्ट कर दिए हैं जमीन। 3 गिफ्ट डीड बना उसके लिए, 2 बना 4.5 डिसमिल का और 1 बना 4 डिसमिल का, 13 डिसमिल। गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड है? गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है? गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है। विल रजिस्टर्ड है? हाँ, विल रजिस्टर्ड है। डिटेल गिफ्ट डीड का डिटेल्स दीजिए। हाँ, एग्जिबिट B6, B7, B8। B6, B7, B8 all executed by defendant। which? Executed by Gulam Rasul, father of the defendants and plaintiff, in favor of Gajla Parveen, All the 3. all the 3। डेट है हुजूर 12/9/2000। All the 3. 11/9/2000 का है, 2/12/9/2000 का। 12/9 और 11? हाँ, 12।
विल का क्या काम है? हाँ, विल का ये कहते हैं किसके? मोहम्मद असलम के नाम से। मोहम्मद असलम के नाम से Execute किसने किया है? गुलाम रसूल ने की है। गुलाम रसूल। हाँ, डेट बताइए। हाँ, एग्जिबिट सी है जो Exhibit सी C। और एग्जिबिट सी बाय 1। डेट हाँ, C and C by 1 दो है। हाँ। विल भी दो है। हाँ, ये भी दो है। दोनों सेम पार्टी को। हाँ, दोनों सेम पार्टी। डेट बताइए। हाँ, एक का डेट है हुजूर, 26/7/99 एक है 26/7/99 फर्स्ट विल। सेकंड विल मान लो सी बाय 1। ये डेटेड मान लो। बताइए डेट बताइए। हाँ, बता 9/11/2004 And the Right. property of the gift deed and the property of the will are one and the same. सेम पर्सन एग्जीक्यूटेड मान लो। Same person नहीं। Property भी same है। हाँ, प्रॉपर्टी भी सेम प्रॉपर्टी है। इसीलिए कह रहे हैं हुजूर कि 13 डिसमिल उसको कर दिए, 43 डिसमिल इसको कर दिए और 23 डिसमिल फिर आप बेचे। एक बात बताइए। Oral will भी permissible है। हाँ है। But when the will is registered, तो वो probate होगा कि नहीं? अंडर द मुस्लिम लॉ तो इसका जरूरत नहीं है। जरूरत तो oral will का नहीं है ना? नहीं, अगर ऐसे भी अगर है तो, क्योंकि वहाँ पर ही मोहम्मदन लॉ में कहीं नहीं कहते हैं कि उसका प्रोवेट कराना होगा। मोहम्मदन लॉ के लिए क्या बिल का प्रोवेट के लिए कोई अलग हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ अलग अलग बना हुआ है? उसका तो प्रोवेट हम लोग की कौन से सेक्शन में होता है? 58 सक्सेशन एक्ट में जो Succession लर्नेड फ्रेंड Act। हाँ 58 प्रोबेट होता है 63 में है और 58 में जो लर्नेड फ्रेंड बोल रहे हैं इज करेक्ट सो फॉर पोजीशन ऑफ लॉ इज कंसर्न 58 में वो चीज है इट इज नॉट रिक्वायर्ड 58 और फिर 212 58 of ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट like that, Indian succession act. हाँ टेस्टामेंटरी सक्सेशन के चैप्टर में Ready, sir? जनरल एप्लीकेशन ऑफ आप पार्ट उनको दीजिए। general application of part. The provisions of this the part they shall not apply the testamentary, the successions to the property of any Mohammedan or save as provided by section 57 or the testamentary the successions to the property of any Hindu, Buddhist, Sikh, Jain, nor shall they apply to any will they made before the first day of the January 1866. The save as provided in the subsection 1 law or by any other law before the time being enforced. ये तो 1866 के पहले का है। Bill made before the first day of January 1866. और उसके बाद And save as provided in subsection 1 or by any other law for the time being in force, the provision of this part shall constitute the law of India applicable to all cases of testamentary succession. So, ये जो लैंग्वेज है तो the provisions of this part shall not apply to testamentary succession to the property of any Mohammedan nor save as provided by section 57 to testamentary succession to the property of any Buddhist Sikh Jain nor shall they apply They are all distinct. हाँ nor अलग अलग है सब अलग अलग है और उसके बाद 2 में save as provided in subsection 1 or by any other law for the time being, provisions shall constitute the law applicable to all cases of testamentary succession. और इसके साथ एक बार वो देख लेंगे 212 देख लेंगे तो शायद वो और क्लियर कर देंगे। इसका फैक्ट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। फैक्ट्स में एक बार वो क्लियर कर देते हैं जो ये था टोटल 60 डेसिमल्स ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था गुलाम रसूल का जिसमें से जो प्लेंटिफ भी बोल रहे हैं 23 डेसिमल्स ये जो है बख्शिश नामा दी गई भाई दोख्तार नामा डीड्स बख्शिश की 23 बख्शिश नामा नहीं 23 13 है 23 है डॉक्यूमेंट्स है हाँ, 13 एग्जिबिट है आपका है 23 नहीं 13 तो अलग है 13 उसी का पार्ट है 23 प्लस 13 36 रिमेनिंग फिर बचा 24 जो है दूसरे को बेचे नहीं दूसरे को नहीं 23 यू गो थ्रू द एग्जिबिट्स 23 घर के लोगों को ही है
उसमें से 3 और 3 6 वो अलग से बेचा गया जो सूट लैंड है उससे। हाँ 10 और 3, हाँ 10 और 3। 10 ये जो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो ये इतना सारा गिफ्ट डीड है, इतना सारा बिल, दे वर ऑल हेल्ड टू बी वैलिड। भाई वैलिड और इनवैलिड तो आएगा ना, फाइंडिंग वो भी नहीं है। Not valid, as because my lord, as per the evidence of the defendant number 3, the gift deed was never acted upon, and he says in the evidence though also the Gazala Parveen never come into possession over the land. So this is with regard to gift. Gift. What about will? The will, so far will is concerned, my lord, the excess land of the total land was the first 23 decimals. The land was sold to the different persons. Now, and the 13 decimals, the land was gifted to Ghazala Parveen. Then, as to how 43 decimals was the gifted to the will in favor of the defendant number 3. कारण अगर ऐसे भी देखेंगे हुजूर, अगर मान लीजिए अगर गिफ्ट को अगर नहीं भी मानते हैं तो अगर 23 से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मात्र 37 डिसमिल बचता है, तो 43 डिसमिल जमीन कैसे उसको गिफ्ट हो गया, विल हो गया उसके फेवर में। अगर मान लीजिए और उसके बाद भी हुजूर लॉ जो कहते हैं, मुस्लिम लॉ जो कहते हैं, अगर मान लीजिए 50 डिसमिल जमीन को कोई बिल कर देता है, उसमें से कुछ पोर्शन वो बेच देता है, तो पूरा बिल इनवैलिड हो जाएगा और इट विल रिमेन वैलिड फॉर द रिमेनिंग ऑफ द एरिया। पूरा इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए कि जो विल जो है, सपोज कि अगर उसको 50 डिसमिल का अगर लैंड है उसको विल कर दिया गया और अगर जो टेस्टेटर है उसके बाद भी अगर जमीन बिक्री कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, या then there is no valid will. Yes, ma'am. कारण वो तो During the existence of will, there is no legal bar in selling the property. कहाँ लिखा? अगर There is no legal bar, transfer नहीं होता है। तब तो फिर अगर will तो कब ना होगा जब मरेंगे। हाँ, उससे पहले क्या ही होगा? तब तो फिर वो तो सस्पिशियस रह गया ना कि जब अगर हम विल अगर प्रॉपर्टी अगर हम कर दिए हैं किसी को तो फिर उसको बेचने का तो कोई रीजन नहीं है। नहीं, हमारा राइट कहाँ खत्म होगा बेचने? उसका तो राइट तब खत्म होगा कि जब उसका डेथ होगा और जब ये एग्जिस्टेंस में आएगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए एग्जिस्टेंस में अगर अंडर द मोहम्मदन लॉ भी एग्जिस्टेंस में तभी आएगा। आप हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई बिल है कि हम अपना पूरा प्रॉपर्टी बिल कर दें, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम उसको बेच नहीं सकते। नहीं, अगर बेच दिए, वही हम इसीलिए कह रहे हैं बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? हम बेच सकते हैं। मेरा राइट तो अभी खत्म नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ, क्योंकि मेरा राइट तो तब जाएगा आफ्टर डेथ में मेरा ये जाएगा। लेकिन अगर हम बेच दिए, अगर हम आधा प्रॉपर्टी अगर बेच दिए तब तो विल इनवैलिड हो गया ना। वही हम कह रहे हैं कि जब अगर हम विल कर ही दिए थे जब 50 डिसमिल, तब तो वो तो उसका तो विल तो है 50 डिसमिल का। अब जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो फिर हाफ का तो नहीं हो सकता प्रॉपर्टी, कभी होगा तो या तो पूरा का होगा या तो नहीं होगा। आप बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन इसके लिए तो जजमेंट चाहिए ना। अच्छा, और इनवैलिड ऐसे भी है कि उसमें अदर लीगल हेयर्स का कंसेंट का जरूरत है, जो इसमें नहीं है। अदर लीगल हेयर्स का कंसेंट का गुलाम रसूल को क्यों जरूरत होगा? Under which provision of law he will need the consent of other legal heirs so far as Article 117 and Article 118. Like, And 40 also says, madam, and Article 40 also says. उसमें 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं और 1/3 सेल्फ एक्वायर्ड भी नहीं कर सकते। चल वो तो 51 में बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस। हम पहले 51 पढ़ा देते हैं 51 उसी पे 51 द हेरिटेबल प्रॉपर्टी 51 देयर इज नो डिस्टिंक्शन। इनहेरिटेंस की बात है ना? हाँ, नहीं, अगर मान लीजिए किसी का सेल्फ एक्वायर्ड
हाँ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हाँ इसीलिए हम इसमें एक बार फिर पढ़ देते हैं। There is no distinction in the Mohammedan law of inheritance between movable or immovable property or between ancestral or self-acquired property. There is no such thing as a joint Mohammedan family, nor does any recognize a tenancy in the common in the Mohammedan family. In the Mohammedan family, there is the presumption that the cash and the household of furniture they belongs to the husband. ये तो commentary का ये part है। 52 में birth right है। The right of an heir, apparent or the presumptive, comes into existence for the first time on the death of the ancestor, and he is not entitled until then no any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor. After death of the father of both the defendants and the plaintiffs, they ultimately come the sons of the Ghulam Rasuls, even in the self-acquired property also. But let's take this fact that during the lifetime of Ghulam Rasul, which was his self-acquired property, he disposed of some of the property, not disposed of, he executed will in connection with some of the property, and with respect to the same property, he also executed gift. But will, my lord, Gift more was than invalid. will is the more than actual property, remaining as- property of the 37 decisions, and there is no consent of the other legal heirs. इसीलिए बोलते हैं कि after death of the testator, consent is the required of the other legal heirs. अगर उसमें से अगर एक भी अगर बोलेंगे कि 4 लीगल ईयर्स है, अगर उसमें से अगर एक भी बोलेंगे कि हाँ कि मेरा कॉन्सेंट है, तो सिर्फ उसका शेयर उस पर डिवॉल्व करेगा, नॉट द इंटायर को शेयर्स। दिस इज द लॉ मैन। 117 नंबर 40 भी अगर पढ़ देते हैं। 40. हाँ, vesting the estate in the executor or the administrator. The executor or administrator, as the case may be, the deceased Mohammedan is under the provisions of Indian Succession Act, Section 11. They is the legal representative for the whole purposes of the property where the deceased the best in him as such. The estate the West, the executor, though no probate that has been obtained by him. But since a Mohammedan cannot dispose of any by will the more than 1/3 of what the remains of his property after payment of the funeral expenses and debts, and since the remaining 2/3 must go to his heirs as on intestacy unless the heirs the consent to the legacies the exceeding the bequeathable third the executor when he has realized the estate is a bare trustee for the heirs as to 2/3 and the active trustee as to 1/3 for the purpose of the will, and of these trusts, one is the created by the act and the probate irrespective of the will, the other by will established by probate. Therefore, my lord, the only limitations, my lord, the 1/3 properties, my lord, with consent of the other legal heirs. Therefore, my lord, the 117 and the 118, there is the restrictions, my lord, the limitation for the will of the property.
117. 17 and 18. Bequests 2 years. A bequest to an heir is not valid unless the other heirs consent to the bequest after the death of the testator. Any single the heir may consent so as to bind his own share. After death of the testator, the consent of the other legal heirs is required. And consent, if the one person the consent, then he is the only share, only his share they devolve upon the beneficiaries. And 118 says, my lord, the limit of the testamentary power. A Mohammedan cannot by will dispose of the more than a third of the surplus of the estate after payment of the funerals, the expenses and debts. The bequest in excess of the legal third cannot take effect unless the heirs the consent the heir to after the death of the testators. Here, one of the more than 1/3 of the property was the wills in favor of defendant number 3 only. And now the property is the more than the transfer the more than the actual property was the which was in the name of the. Therefore, the one judgment of the Kerala High Court, the paragraph 16 of citation. 2011 volume 4. Volume 4 JCR, page 252. Kerala. Paragraph number 14, words, my lord. May I read, man? Hence, it can only be found that the event under exhibit which the will, there is not the bequest, the defendant number 2 and the 7th, who are the widows, the deceased, Meera Sahib and the plaintiff. The son of defendant number 7 and who are also the heirs of the Meera Sahib, they did not give the consent to the bequest under the exhibit B2 after the death of the Meera Sahib. The bequest under the will were not valid, though the learned counsel argued that under sections the 118th, the only restrictions is that the Mohammedan cannot by a will dispose of more than 1/3 of the surplus of his estate after payment of the funeral expenses and debts, and such the bequest with the excess of the legal third cannot take effect unless the heirs consents thereto after the death of the testators and the bequest provided under section 118 is only to a stranger and then not to an heir. It was also argued that even if the applies to the bequest of the heirs, but also when the bequest of each of the legatee that does not exceed the legal 1/3, the will is the valid and therefore the exhibit to the will is the valid, it cannot be agreed. The section 118, the limiting the testamentary, the power of the Mohammedan, it applies to all the bequests, whether the legatee under the will is stranger or heir or son of the heirs. The bequest could only the will in respect of the legal 1/3 of his properties. A Mohammedan cannot execute the several wills in favor of different heirs and the strangers, so as to limit the bequest under each will to less than the legal 1/3 of the and thereby the circumvent the bar provided under section 118. The total the bequest will do not accept the legal 1/3. The excess would be valid only if all other heirs give their consents after the death of testators. If no such consent is given, the bequest to the extent of excess of the legal 1/3 is valid.
Section 117 wills that the bequest only to the heir if such the request is in the favor of and the heir, the sum of the heirs, the living, the other heirs is invalid. If the consent of the other heirs is the given after the death of the testator, the bequest will be valid if the only sum of the heirs give their consents. The bequest will be valid only to the extent of heirs' shares. The restrictions provided under sections 180, they restricting the testamentary capacity of to the extent of legal one that cannot be watered down by limiting the restrictions to the bequest in favor of the each of the bequest. When section 117 they specifically provides that the bequest to and the heir is not valid unless the other heirs the consent to the bequest after the death of the testator, even if the such bequest is in respect of the 1/3 the surplus left by the testators, the bequest will not be valid unless all the heirs they had given consent to the bequest subsequent to the death of the testator. Though any single heirs may consent so as to bind his own share, but the such consents will not operate as against the other heirs who did not give consent. The when under sections 118 of the Mohammedan, they cannot be disposed with the more than 1/3 of the estates the left after the payment of debts and the funeral expenses. The said restrictions is not limited to each of the bequest. It operates against the total of the bequest, hence the arguments of the learned counsels appearing before the appellant that each of the bequest does not exceed the legal, the 1/3 exhibit B2, the will is valid, they cannot be accepted. The when exhibit B2, the will does not satisfy the test under sections 117, it can only be held invalid. Therefore, the finding of the courts below that the under exhibit B2, the will, the appellant cannot declare the exclusive the right over the claim, scheduled properties and the claim for partition, they cannot be defeated. The based on exhibit B2, the will is perfectly legal and the warrants no interference. So, my lord, in this case also, my lord, without the consent of the other legal heirs, and the will was executed the more than 1/3 the properties, my lord, in favor of the beneficiaries. And the challenge, my lord, and says no, more than 1/3 the properties they cannot be wills in favor of the. So according to you, these two questions of law, let's come one by one. Yes, my lord. One more judgment, my lord, with Guwahati High Court, my lord, with paragraph 11, my lord, very short. इसका एक फेयर कॉपी दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बुक से फोटो कराए हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है। PIR 2013 गुवाहाटी केस कॉपीज, इसका फेयर कॉपी है, पैराग्राफ 11, पेज 34। ये substantial question of law 1 point. हाँ, substantial question of law 1. Whether the first appellate court committed the perversity by ignoring the fact that even though undisputedly the plaintiffs are the heirs of the Ghulam Rasoods, they having not consented to the bequest after the death of the Ghulam Rasood. The will executed by Ghulam Rasood in favor of defendant number 3, Muhammad Aslam, was not valid in view of Article 117 of the Principle of Mohammedan law. So, in view of these judgments, which the line is the will they executed in favor of the defendant number 3 is invalid, therefore they cannot claim these. So whatever be the will, subsequently it has to be considered. Yes. Irrespective of 1/3, 2/3, whatever. Yes, ma'am. So basically, without the consent of all the Legal heirs, family members yes, and legal heirs, yes. There is no question of. No question of. So a person, a Mohammedan, can, by executing a will in favor of one of his family members,
that will can be annulled Annulled. if all the other persons of the legal heirs Legal heirs. of the testator does not consent. Yes, ma'am. And suppose there is a consent at the time of execution of will. will बनाते समय consent दिया बाद में नहीं दिया। क्या होगा? Then invalid. As per law, ma'am, after death of the testator's ma'am, the consent is required. Practically, there is no concept of will. Yes. Practically, if everybody agrees, Yes. practically there is no concept of it. The will be invalidated if any one of them does not consent, Yes, ma'am. and it will be executable only to the extent the consent is given. Yes. अगर वो बोल दिए कि देखिए फादर बोले थे डेथ के समय में कि तुम्हारा प्रॉपर्टी होगा, अगर वो बोल दिए कि हाँ ठीक है फादर बोले हैं तो जाओ तुम्हारा हो गया, तो जो बोल दिए सो हो गया, जिसको नहीं बोले उसका नहीं होगा. Roman 2 बताइए. हाँ, Roman 2 बोलते हैं. So they, whether both the courts below they have they committed the perversity by admitting the hibanama, the allegedly executed by Ghulam Rasul in favor of Ghazala Parveen in absence of any pleading. So there is no pleading of guilt. No pleading, my lord. Just may read my lord the WS my lord of the. He will point out. हाँ. According to you, there is no pleading of No pleading. of gift. Yes, my lord. So it is beyond the pleadings. Beyond the pleadings. Next, Roman. Next, my lord, whether the first appellate court they committed the illegality in the observing that this since 13 dismissals of the suit land they have been they mutated in the name of the Ghazala Parveen, hence the Ghazala Parveen is the necessary the party to the suit, and thus the suit is the bad for non-joinder of the necessary party. This case, my lord, was there is no such the pleading in the WS. In the very first time, it has come in the evidence of the defendant number 3 that Was there any objection with regard to non-joinder of necessary party? no, there was No such claim no such. regarding non-joinder. And secondly, man, to one judgment in the Rajasthan High this Court. moment, and this 13 decimal of land is the total land for the bill. Yes, So this mutation of 13 decimal of land in favor of Ghazala Parveen was arising out of bill. yes, There was no pleading regarding bill, and therefore there is no relevance of this mutation. no, And there was neither any pleading regarding bill, regarding gift, nor there was any pleading regarding handing over the property pursuant to the will. yes, And ma'am. therefore, this plea of 13 decimal being mutated in favor of Ghazala Parveen is irrelevant. Rather, my lord, was the defendant number 3. They specifically they deposited the evidence that Ghazala Parveen they never they come into possessions over the land which was they gifted to her, my lord. And Yeah, you see, if there is no pleading of gift, Huh. so there can be no finding of gift. no finding. Therefore, she will have her own right to get her Own right right. declared with Yes. regard to this particular Yes, property. she has the own right. Therefore, the no. So far, the impedance the party is not required, my lord. She would neither be a party nor her gift will be Disturbed. by virtue of any decree which may be passed or has been passed Yes, in the ma'am. present. Yes. Correct? Yeah. One thing small is one judgment of the Rajasthan High Court, my lord. The paragraph the 23 and 24, my lord. Even if this is not in the Partition, the 1971 Rajasthan, page 274. Is 274. Page 274, paragraph 23 and 24, my lord. In the present case, as they already stated, the plaintiff they has the non the confined which they claim the 1/7 share in the suit property the which they view. The allegations they made in the plaintiff they cannot be said to be more than what they would be entitled to provided. See, the law is well settled that there cannot be anything beyond the pleadings. Yes, madam. तो इसलिए आपको judgment किस लिए चाहिए? जजमेंट इसलिए हुई कि अगर उसका अगर अपना अगर राइट अगर डिस्टर्ब हो रहा है then he कहाँ will disturb हो रहा है? define. She is not a party. Therefore, my lord, if she has any grievance, my lord, he will define the She is suit. not my a lord. party in the suit. No, उनका अपना grievance है, तो grievance वो को जाके तू अपना क्या suit. करेगा? Therefore, this judgment. She will go for the declaration. Yes, whatever. therefore this judgment.
So therefore, any finding in connection with Ghazla Praveen and the gift is to be set. Who is the applicant? Ghazla Praveen is not the applicant. No. क्या बनना है? Yes. Now the first issue, the first question of law, in respect of the will, they filed the plaint seeking a relief for partition, making a claim of joint family property. Now it is important to note that under the Mohammedan personal law, which is protected The under suit was filed after death of the yes, person. yes, much after death. He died in the year 2006. The date is there on this document. Then what happened? Died on 8/8/2006, and the suit filed in the year 2012. Now they sought the relief on the premises that is it is a joint family property, and they all constitute to be the co-parceners, members of that joint family property, and so they are entitled for partition to the extent of As per the moment. as per the that is the crux that under the provisions of the personal law, Mohammedan law, there is no such concept of joint family. There is no such concept of joint family upon which we are relying upon a judgment. I will place that. So now the onus lies upon them to prove that it was a joint family property. If there is no concept of joint family, means what do you mean that there will be? Suppose a person, a Mohammedan dies, leaving heirs, Yes. right? How will the property? If he be dies intestate without leaving a testamentary declaration, Yes. unlike the present case, Yes. then there is a particular shares Devolution. devolution. Particular shares are marked. That's right. They will This get. is- This is what it is. They will get their particular share. Yes. But now here it is a case where we came out with a specific plea in our WS that this property, pursuant to the will, stands recorded exclusively in our name, and the records of right has also been accordingly entered. The land having been mutated in the year 2006-7, mutation is a evidence of semblance of possession. It is evidence of possession. So it is in exclusive possession of our pursuant to that law. So This mutation was after the death or before the death? it was in the year 2006-7. See After the death or before the death? the date, the exact date is not coming. The mutation case number is there, 682 R27 2006-7, which is there in our pleading in the WS. So that will give you title. 6 or 7. No, mutation will never give any title. It neither creates any title, nor it extinguishes anyone's title. I am making the submission only for the proposition that since they came out with a plea that we all are family members, we all are having a joint status so far as this suit land is concerned, 37 decimals, and therefore we are entitled to get certain share out of this suit land in accordance with Mohammedan law. Now when we came out with a case that there is a will, one will executed in 26/7/99, another will in the year 2004, both the wills are registered wills. Those wills, In favor of the same person? same person, different lands. Different. 30 decimals? same land. No, not same. Go through the recital. Land arising from the same area of same- land. same Same plot. land, same wills. You have to say the Area land is by different. boundary. You have to say by the boundary. 30 decibels and 13 decibels. 30 plus 43. So it is different land. Maybe of the same khata, That's same right. plot. 30, 40. These are registered instruments. There is a validity of presumptions. No challenge has been ever made to these registered wills at any point of time. So there also I will just relying upon a judgment, Honorable Apex Court 2006, which says about the validity of a registered will and a presumption and the need to challenge it in accordance with the provisions of section 31 of the Specific Relief Act. If an instrument is standing against someone, it will cause some harm, then it is required to be challenged. Now one important fact from the records, one of the sale was made by Ghulam Rasul. Ghulam Rasul is the father of the plaintiffs and the defendants, Ghulam Rasul. He is the testator. Ghulam Rasul. Ghulam Rasul, during his lifetime, he executed a sale deed to one Yuva Sundi Samaj.
let me just see one thing. So far as the question of law number 1 is concerned, Yes. it is directly touching upon the legality of the will. Yes. Do you want to say that will was never challenged in the suit? Will was never challenged in the suit. Even after we stated that, even at that point of time, no amendment was proposed seeking a relief that the will is illegal or void or not operative or not binding upon them, anything like that. No such relief was ever sought for even after that. And not only that, one important thing is that the will was within knowledge of the plaintiff number 1. That is an important fact which has a bearing on the issues of this case. You see, knowledge may not have much bearing because will was not under challenge. What you would like to say that the bill itself was not under challenge. Yes. It was disclosed in the written statement. Additionally, you say that it was in the knowledge of the plaintiff. Yes, yes. Plaintiff number 1. Because in one of the cell deed, which is part of the evidence, exhibit P9, the plaintiff number is one is a witness to the cell deed, and the recital of the cell deed clearly refers to the will executed by Ghulam Rasul in favor of Aslam. So, meaning thereby, plaintiff number 1, Akhtar, it was well within his knowledge that a will has been executed by his father. That was in the year 2000. In the year 2000. I am admitting In the year. And so, despite having knowledge of the will, I am he did not just let me allow. It is better we do not. You just tell us one. Without any challenge to the will, can the validity of the will be questioned? It's a registered No, this is the suit for partition, my lord. maybe so. This is the suit for partition, and the very first time, my lord, he brought the will, my lord, during course of the partition suit, and he says, you know, the properties they have been the property, the will in favor of the defendant number 3. So in partition suit, my lord, the doesn't require to challenge the will. I'm not supposed to know law. You are supposed to know law. I just want to know from you. So it doesn't require, my lord, to challenge the will, my lord, in this case, in partition suit. All these judgment of the Guwahati High Court, my lord, and the Kerala also, my lord, during course of the suits, my lord, they brought the will, and that will is itself invalid, my lord, as per the articles, the 117 and 118, my lord. Therefore, it is not required to challenge. No requirement to challenge. Yes. Do you have any judgment on this? Yes, 2006. Paragraph 27 of this. What do you have to say to Roman 2? Question number Roman 2. Yes, on Roman 2. Is there any pleading regarding execution of gift? No. Admittedly, there is no pleading with regard to that. Admittedly, and Order 6, Rule 2 CPC in fact prohibits giving of evidence beyond pleading. So far as Roman 2 is concerned, I will just answer one thing. It may not have a significance in the background if this Honorable Court finds that while deciding the first question of law, that the will being executed, validly registered,
and a challenge was not put to the said will at any point of time, much less within time of limitation. It was not put at any point of time, a registered document. And further, one additional point on that, we will also submit that there was consent. What they were saying, Article 118, there was a consent because Consent of whom? plaintiff, When? at the time of when one cell deed was executed, At the time of, during the lifetime. During the lifetime of Lifetime. So the consent is this- required after death. there this additional point, this additional Consent is required after yes, death. consent on that we will just say And that's consent. the Consent. entire I am just, entity. if my friend allows, I am not No, no. interrupted. It is not proper. Consent may be express or implied. Express consent is not there. We have to imply the consent from various circumstances. One important circumstances is that you have been a witness to the said cell deed. You never thereafter, even thereafter, you did not put a challenge to that. You did not mention it in your plaint. You concealed that fact in the plaint that yes, there is a will. You did not mention it, and you kept silent for 12 long years. The first will 99. The suit filed 2012. Father died in 2006, and mutation also made in 2006. So after 12 years of the will, after 6 years of death of father, after 6 years of mutation, you are putting a challenge to the will, and at that point of time you had knowledge about the execution of the will. There is a specific recital, and further, now also it is again within your knowledge when you file the written statement. Here also you do not propose to amend the plaint or seeking of a new relief to challenge that instrument which is standing against you. And the other thing which this Honorable Court also pointed out, even otherwise, 13 decimals which we said in evidence, we have brought on evidence the correction slip in name of Gajala Praveen. Any judgment would be not binding on her because she is not a party, it will not be binding upon her. And the third question of law which is related with that, perhaps while framing the third question of law, perhaps the findings of the learned appellate court has not been properly looked into or not been properly brought to the notice of this court, because there is no such finding in the judgment of the learned appellate court that the suit is bad for non-joinder of necessary party. We have tried to read it out again and again. There is a finding with regard to sisters that they have not been made party, but there is no such finding that Gajala Praveen was a necessary party. Her being not joined as party so the suit is bad for non-joinder of necessary party. So there is no such finding in the learned appellate court's judgment. That we could not find. So far as the issue number 3 is concerned, probably it could not be brought to the notice when the issue was being framed. That is not there. And issue number 2 may not have a bearing on the ultimate result if the first issue is considered and decided. And as the will was a registered will, it was acted upon, delivery of possession was there, therefore I refer to the mutation which we have mentioned in our written statement, that mutation shows possession, meaning thereby delivery has been given to the so far as the beneficiary is concerned. And I have still to find out whether this consent has to come at the time of execution of the will, at the time when the will is framed, or it is post death. as per law, it is post death, as per law. And as per law, will exceeding 1/3 of the property, up to 1/3 can be given. Up to 1/3 there cannot be any dispute, that has to be protected. 1/3 has to be protected, even otherwise. Beyond 1/3, the person can merely act as a trustee or like that. He cannot be if there is no consent. Beyond 1/3. What we could gather from 116 to 118, the concept of will is there. Let me just go through these judgments, whatever you have said. We can continue it tomorrow. And let me just go through the records once. And perhaps थोड़ा if Mohammedan law का थोड़ा history और ये सब हम लोग का regular course में नहीं आता। ठीक है ज़्यादा matters नहीं के 2-3 case में है। and there is one recent judgment where on the issue of consent, not recent, 11,
because as this honorable court says, there is not much law. On the issue of consent, para 35 maybe, so far as implied consent is concerned, on that alternate. Implied consent is post death. Post death from the conduct of the parties. Post death or pre death. It is. It's two different situations. Two different situations. It says in general about 35. And then one judgment is also relied upon by the learned appellate court, Abdul Manan. Perhaps that is copy of that judgment that will be recorded. Citation. Yes. Abdul Manan Khan. This is also relied by the learned appellate court with regard to the will and its execution and its format. In case of the Abdul Manan Khan case, इसमें under the Mohammedan law, in the will under the Mohammedan law, the Evidence Act in the is not applicable. This judgment says Abdul Manan Khan's judgment says. And one judgment was on, so far as there is no joint family system which was saying in Muslim law, that is of our report 2010. Joint family system is not there, but the property will devolve as per Mohammedan. Yeah, but here the burden is more because it is a case where they are claiming partition. We are saying that there was a testamentary declaration, we have got it by a registered instrument, and we have it has been given force to. There is a mutation. We are enjoying that property. We are in exclusive possession. So it is now our exclusive property. It cannot be subject to partition. On that issue, this point we are raising. In case of the Mohammedan law, it is not applicable. Therefore, the Abdul Manan Khan's case, says the Evidence Act. Therefore, on the ground of that, the finding of that judgment, the reverse the judgment, because the Mohammedan law is not. You have to say what I want. थोड़ा हमको पढ़ने दीजिए, कल करते हैं। तो बिना पढ़े लिखे सेकंड ओपिनियन डिसाइड किया जा सकता है। Because in a suit for partition under Mohammedan law, what will be the consequence of a will coming into future, and whether the validity of the will can be examined irrespective of the fact that it is not under challenge. Registered will, there's a oral will तो है नहीं, या ऐसे कोई सादा will तो है नहीं, और Indian Succession Act अप्लाई भी नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, वही अब्दुल मानन खान को वही करेगा। इसलिए तो कोई पैराडाइज नहीं होगा नहीं। The consequences of a will, दूसरा बात एक चीज और है, 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ नहीं दे सकते। यहाँ 43 डिस्ट्रिक्ट्स देते हैं। अगर मान लीजिए 1/3 देते हैं तो भी कंसेंट का जरूरत है। नहीं, 1/3 तक के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं। इट इज क्लियर फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लीजिए कोई बिल को कोई चैलेंज नहीं करता है, तो कहाँ से प्लीडिंग आएगा कि उसका कितना प्रॉपर्टी था? हो सकता है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी हो किसी की। नहीं, इसमें तो एडमिटेड है कि 60 डिस्ट्रिक्ट्स लैंड। हम लोग कोई केस वाइज नहीं डिसाइड करेंगे। हम लोग कोई भी चीज डिसाइड करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज टू बी सेकंड अप्रील में वी हैव टू डिक्लेयर द लॉ। हाँ, ये तो लॉ डिक्लेरेशन है ना, कोई ऐसा केस टू केस बेसिस में नहीं हो सकता है। कुछ फैक्ट पर सब्स्टैंशिएशन ऑफ लॉ बन जाते हैं, लेकिन अदरवाइज केस टू केस बेसिस में नहीं होता है। You have to declare the law. So we have the responsibilities all the more. क्योंकि एक लॉ डिक्लेयर हो जाने के बाद लार्जरमेंट से ही सेटिस्फाइड होगा या चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाइड होगा। और हमको जो भी डिक्लेयर करेंगे हमको सब केस में अप्लाई करना पड़ेगा। हम नहीं बाद में बोल पाएंगे कि वो ये
only in fact and circumstances वाला 226 वाला plea नहीं चलेगा. ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. So therefore, what is the consequence of no challenge to the will? Something which is required to be seen. Whether it is required to be specifically challenged. क्योंकि fact तो है ना, fact तो आपको prove करना पड़ेगा. पहला fact prove करना पड़ेगा that the bill was for property more than one. तो that fact कब आएगा? जब bill under challenge होगा तभी ना आएगा. जब bill under challenge नहीं है तो ये fact, ये pleading, ये सब चीज़ कैसे आएगा? इसमें थोड़ा काम करिए. हम देख. Whether without challenging, because substantial question of law number 1 is specifically relating to the legality and validity of the bill, and it indicates as to whether the bill is hit by Article 117 of the Principles of Mohammedan law. Okay? And admittedly, this bill is not arbitrary. बिल तो तब एग्जिस्टेंस में आएगा जबकि अदर लीगल ईयर्स का कॉन्सेंट होगा. अगर नहीं आया तो फिर बिल ही नहीं. Second appeal number 118 of 2019. The arguments have remained inconclusive. दोनों का appearance record. The matter has been heard at length. Goes for further hearing कल. सेकंड हाफ में शायद डिस्टर्ब रहेगा कोर्ट तो 145 there is a अच्छा हाँ कल. Tomorrow it's not. परसों. Yeah. 215 में आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है. पाठन है. फिर इतना कहानी सुनने के बाद. नहीं. This matter भी छूटेगा. चलिए चलें. कोई बात नहीं. हम प्रणाम करें. For judgment, item 1, first appeal 188 of 2018. आपका वो written statement वगैरह का कुछ कलेक्शन अभी चल रहा है. कुछ कलेक्शन अभी चल रहा है वो written statement को लेकर. But I will pronounce that. This appeal is allowed. And then we have the meeting. कल तक आ जाएगा. First appeal is for orders item 5, second appeal 52 of 2020. In this case, notice was issued to respondent number 128 while order dated 2nd January 2025. And Your Worship, as per the service report, the notice to respondent number 3 is not served, and the respondent number 7 it has been returned as undelivered, Your Ladyship. And the service report for respondent number 1, 2, 4, 5, and 6 is still pending. So we'll adjourn it for some time. When was the notice issued? 2nd January 2025. We should adjourn it late for this. Ordinary process. Ordinary process. Both processes. And for respondent number 3, it has not been served, and 7 and 8, it has been undelivered. The partition suit. Yes, ma'am. Partition suit. Beta कौन है? Respondent number 8 का Saurabh Jaiswal. Saurabh Jaiswal is one of the defendants or party in the case. No, Your Worship, he is not a party. He is not. देखिए. Essay number 52 of 2020. As per office note, the notice upon the respondent number 5 and 7. The in view of office note, notice upon respondent number 5 and 7 is accepted as valid, as validly served. So far as respondent number 8 is concerned, it is accepted as validly served through his son,
being resolved as well. RTS is what? RT is what about 6? 6. 6, the service report is awaiting. With respect to other respondents, the service report is awaited. Post on 15th of April, office is directed For 7 reminder for service report. and for respondent 7 it has been undelivered, and for respondent 3 it is answered with addition. So fresh notice will be issued. Ordinary process तो किसी का नहीं है. Ordinary process का नहीं करेंगे. अभी तो registered का आया है. Date it should be 15. From daily Saturn 3 first appeal 153 of 2023. Are you there in this Three. space? No. Lordship, in this case, I am appearing for the respondent. Lordship, time, it may be taken up in the next week, Lordship. Next week on Tuesday. I am supposed to argue, Lordship, on behalf of the respondent. I will not seek any adjournment. By way of last chance, Lordship. Last chance already given. Where for time is allowed by way of last chance. Lordship, this is ये my... सारा repeated orders. Lordship, this is... ये सब judicial order का आप लोगों के mind में कोई value ही नहीं. नहीं वैल्यू है वैल्यू नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं ऐसा वैल्यू आपके ऑर्डर का वैल्यू नहीं होने का कोई सवाल नहीं कहीं से. देखिए ना. नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं. दो ऑर्डर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हुजूर, उसमें कुछ नहीं बोले. हुजूर के ऑर्डर का रेस्पेक्ट नहीं करने का कहीं कोई सवाल नहीं है बाय एनी स्टेज ऑफ इमेजिनेशन. देखिए लास्ट मोमेंट में हुआ है, कुछ होने वाला भी नहीं है. इसको ऐसे ही नॉट टेकन अप. बस ऑर्डर नहीं बस आप कोई ड्रॉप मत कीजिए, क्या कि हम लोग नहीं अदरवाइज तैयार भी है, अदरवाइज तैयार भी है, सब भी तैयार है. नहीं हुजूर, कहाँ तैयार है? नहीं बोले नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक करेंगे, क्या कि कल इनका बहुत ज्यादा सारा केस लगा हुआ है. आज अभी शुरू होगा तो कहाँ से होगा? हाँ, इसलिए चाह रहे थे नेक्स्ट वीक तो हम बिल्कुल, लेकिन तैयार सर भी है. ये क्या फाइनल लिस्ट? हाँ फाइनल. हाँ फाइनल लिस्ट ठीक है, नेक्स्ट वीक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा. फर्स्ट अपील है, इसलिए फाइनल डिस्पोजल. क्या मैम? Suit for declaration of title and recovery of possession है हुजूर, decreed by the trial court. वो इनको अंदाज है कि लोग उठा के करते हैं. ये स्पेशल केस है. People are fighting to such an extent. It just ज्यादा ही लोग लग रहे हैं. जी.